हेलो। बस ये प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत, क्योंकि कुछ घंटे में मेरी जेई मेंस है, फर्स्ट सेशन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो थोड़ा बहुत मैं दिमाग खोलने के लिए कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगा। लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं फर्स्ट पैराग्राफ है, एक ही पैराग्राफ है एक्चुअली, राइट? या लेट्स जस्ट डू दिस थिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, in a container filled with liquid, okay, if the container filled with liquid gets accelerated horizontally or vertically, pressure in liquid blah, blah, जो भी है। Ax ay क्या है, right? उसकी free surface has the slope something, case of vertical acceleration this has, for calculation of pressure effective g is used. Okay, a closed box with horizontal base 6 meter by 6 meter and a height 2 meter is filled with liquid. It is given a constant horizontal acceleration g upon 2 and vertical acceleration g upon 2 direct, okay, g upon 2 horizontal है और vertical भी g upon 2 है but downward, so like this. So सूडो फोर्सेज अपने को कैसे अप्लाई करना है? जस्ट लाइक इफेक्टिव जी के लिए जी अपॉन टू ऊपर और जी अपॉन टू ऐसा, बट देन जी तो ऐसा रहता ही है, सो बेसिकली ऐसा हो जाएगा जी अपॉन टू इन दिस डायरेक्शन एंड जी अपॉन टू इन दैट डायरेक्शन, राइट? सो बेसिकली लाइक यू नो g upon square root 2 in this direction, I would say. Okay, so वो अपने को समझ गया. What do you want to find? You want to find angle of free surface with the horizontal. Of course, ये जो है it's going to be 45 degree, right? This is the free surface because it's going to be perpendicular to that. You know the thing. So yeah, 45 degree. So D is the answer. First answer D. Second question, right? Okay. Length of exposed portion of top of box is equal to exposed portion of the top of the box. So box अपने को कैसे dimensions दी उसके 6 by 6 है. Horizontal base जो है that is 6 by 6 and height 2 meter. तो like this, ये 2 है and this is 6 basically. तो ये ऐसा होगा, right? ओके, और 45 डिग्री है और क्या कंप्लीटली फिल्ड था ना? नहीं, हाफ फिल्ड था. सो फर्स्ट वन था ये, ओके, और अब क्या हो गया? नाउ इट्स लाइक दिस, राइट? तो जितने जितना यहाँ से रिमूव किया होता है तुमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया होगा, सो ये स्टिल वन है ये वाला पॉइंट. या और अब एंगल 45 डिग्री चाहिए अपने को, सो वो तो पॉसिबल है नहीं इनफैक्ट. ओके, क्लोज बॉक्स, ओके, दिस इज लाइक दैट. ठीक है ठीक है, क्लोज बॉक्स दिस माइट एक्चुअली मेक सेंस, यू नो. सो 45 डिग्री एंड द वॉल्यूम या फिर एरिया बोलते हो अभी के लिए, राइट? जो ये जो एरिया रहेगा ये वाला जो यू नो, ठीक है. सो 1 टाइम 6 6 कॉन्स्टेंट अपने को रखना पड़ेगा एंड आई एम गेसिंग कि ये इस टाइप का हो जा रहा है. सो इट्स 45 डिग्री लाइक दिस, आई गेस. या फिर शायद ऐसा, ओके, लाइक ऐसा हो सकता है. सो अगर ये 45 डिग्री है, वी नो दिस इज जस्ट 2, तो फिर ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पे कुछ तो भी डिस्टेंस रहेगा, वी डोंट नो. सो ये जो एरिया रहेगा दैट्स गोइंग टू बी जस्ट 2. तो फिर अपने को 4 का एरिया और चाहिए रहेगा, तो ये 2 और 2 होना चाहिए. सो दिस इज 2 एंड 2, राइट? मतलब ये जो अपना लिक्विड है वो इस टाइप से होगा. दिस इज 2, दिस इज 4, दिस थिंग इज 2, दिस थिंग इज 2. या एग्जैक्टली, तो ये जो पूरा एरिया होने वाला है दैट्स लाइक कितना? 3 टाइम्स ऑफ 2, राइट? सो 6 एरिया होगा, दैट्स राइट. तो अपने को चाहिए क्या? लेंथ ऑफ द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ टॉप ऑफ द बॉक्स. सो टॉप ऑफ द बॉक्स इज दिस थिंग, उसका एक्सपोज पोर्शन कितना है? 4. नेक्स्ट, और क्या है? वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सेंटर ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू बॉटम ऑफ द सेंटर ऑफ बॉक्स. सो ये सेंटर ऑफ बॉक्स है, इसके ठीक बॉटम पे, राइट? ओके, सो यहाँ पे मतलब कि ये 2 और 3, यहाँ पे 3 मार्क पे कैसा रहेगा? सो एट एक्स इक्वल टू 3, राइट? ये जो है ये 1 यूनिट रहेगा, सो इसका भी 1 यूनिट एज वेल, राइट? या सो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है. सॉरी, ये 2 यूनिट्स होगा, राइट? दिस इज 2, दिस थिंग इज 1, तो ये पूरा मिला के 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3, तो फिर ये यहाँ पे 1 आएगा, राइट? ओके, सो वी जस्ट वांट व्हाट? द वाटर प्रेशर एट दैट पॉइंट, राइट? एट दिस पॉइंट. सो जस्ट डू दिस थिंग. या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना कि यू नो यहाँ पे जो प्रेशर है इसको नीचे करो, बट क्लोज बॉक्स है बाय द वे. या ओके, इट्स अ क्लोज बॉक्स. ये प्रेशर अपने को पता नहीं कितना है, जस्ट अज्यूम कि वो 0 है, यू नो. सो हाफ फिल्ड वैक्यूम है क्या ये? ठीक है, हाफ फिल्ड. जस्ट अज्यूम कि ये जो है ये वैक्यूम से भरा हुआ. ओके, देन अपने को सिर्फ यहाँ का रो जीएच निकालना है, दैट्स ऑल वी हैव टू डू. या फिर आप ऐसे भी सकते हैं ना कि यहाँ का प्रेशर निकाल लेते विच इज 0 और नीचे जाएगा बस यहाँ से, राइट? ऑफ कोर्स
सो या तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g/2 था और हमारे कितना किस था ऐसा था, राइट? सो मैंने सूडो फोर्सेस लगाने के बाद में g/2 लाइक दिस, g/2 लाइक दिस, राइट? सो ये g/2 का कुछ काम हुआ ही नहीं, जस्ट g/2 लाइक दैट्स लाइक g/2 टाइम्स, यू गेट द आइडिया। सो रो जी एच अपने करना है, डेंसिटी वी एक्चुअली डोंट नो, टाइम्स इफेक्टिव जी जब नीचे गए, दैट टाइम्स ऑफ हेड, दैट टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ कोर्स। सो ये हाइट कितनी है, 1, राइट? और डेंसिटी कितनी है, वाटर है ना ये, डेंसिटी तुमने दी नहीं रखता। ओके ओके ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा ये एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है, ओके दिस इज तो फिर यहाँ पे पी नॉट प्रेशर रहेगा, राइट? ओके, सो पी नॉट प्लस रो g/2 इन दिस केस, और ये सब एसआई में चाहिए अपने को। सो 10⁵ प्लस, अच्छा ये भी एसआई में दिया, बहुत बढ़िया। सो 10⁵ एंड देन दैट टाइम्स 10 इज लाइक 10⁴, ओके अपॉन 2 बनाना, लाइक 5 टाइम्स ऑफ 10⁻3 कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 105 टाइम्स 10⁻3, दीज मैनी पास्कल्स। तो फिर क्या चाहिए अपने को, चाहिए मेगा पास्कल्स में। ओके, सो 10⁻6 लगने वाला है। वेट, दैट्स 10 course, so we just want 0.105. Is this not correct? It must be, right? इसको तुम जान ही रहे, राइट? ये प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूस रहने वाला है, तुम ऐसे भी जा सकते हो, ऑफ कोर्स यू कैन गो लाइक दिस एज वेल। सो उसके लिए 1/√2 टाइम्स g/√2 रहेगा। सो वो स्टिल g/2 होगा, लाइक रो g/2, दैट्स स्टिल द प्रेशर दैट गॉट इंक्रीज, ठीक है? सो पी नॉट प्लस ये चीज, दैट्स द थिंग, वॉल्यूम तो चेंज हुई नहीं एयर की, तो वो स्टिल सेम रहने वाला है। अपने को चाहिए मेगा पास्कल्स में, दिस इज वियर्ड। 0.1 megapascals already है, and now you want 0. तो 10⁻80 is like 0.005, which is not there. Oh, it should be 0.005. Sorry. See, na? Yeah, okay. So 0.1 plus 0.005, it's only 0.105, of course. जो कि यहाँ पे है ही नहीं, unfortunately. This doesn't make any sense, doesn't it? Right. Water pressure at the bottom of the center of box. The bottom of the center of box. What? Of course, this thing, right? Yeah. तो तब तो प्रेशर ऐसे ही होना चाहिए, और क्या हो सकता है? इसमें दिया नहीं है, राइट? जस्ट थर्ड अजीब है, लेट्स मूव ऑन। फोर्थ, इट्स सपोज टू बी 0.105 मेगा पास्कल, आई गेस, राइट? ओके, नेक्स्ट, minimum value of water pressure in the box is equal to, of course, the atmospheric pressure. What else? So uh, sorry, maximum value, okay, maximum value चाहिए। सो या मतलब तुम्हें मैक्सिमम ऐसे ट्रेवल करना है, तो वो कब मैक्सिमम रहेगा? ऑफ कोर्स ये पॉइंट, व्हाट एल्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे या इट्स गोना डिक्रीज और यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर इट्स गोना बी मैक्सिमम। तो अपने को ये लेंथ ढूंढनी है। ओके कूल, ये पूरा बेस एरिया कितना है? इट्स जस्ट 4, ओके दिस एंगल इज 45 डिग्री, इट्स मेकिंग 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। अपने को ये लेंथ ढूंढनी पड़ेगी, या यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर ये कितना होगा? इट्स गोना बी 2√2, सो फिर 2√2 टाइम्स g/√2 times rho, right? This is the pressure difference. Okay, that's plus V naught. So चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। It's gonna be just √2g plus, okay, that times rho of course, and that plus P naught. P naught तो already 0.1 है, so कुछ मेगा पास में ना, okay, and plus ये चीज square root of 2 times rho times g, तो वो कितना होगा? Yeah, I guess that is the thing. Oh, it should be g/√2, not g/2, तो ये गया, it should just be 2g. ऑलमोस्ट मिस्टेक करना था मैं। ओके, सो 2 टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स, हाँ वो ठीक है, अपने को मेगा पास में चाहिए। सो रो जी कितना, 10⁴, सो ये 0. वेट, व्हाट, या ओके, रो जी इज एक्चुअली 10⁴, तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी, ये अपने को मेगा पास 0.0, गॉड, 0.01 टाइम्स 2, सो 0.02 लाइक दिस, सो बेसिकली 0.12, और वो नहीं है। आई डोंट गेट इट, क्या गलत हो रहा है? इट इज सपोज टू बी g/√2, यस, राइट? तो ये पॉइंट
Okay, 1.4 कैसे आ रहा है इसमें? I don't get that. This is 4, this thing is 2 square root 2, of course. H is g upon square root 2, it's square root 2 times g upon 2, so it's supposed to be g upon square root 2. What's the big deal problem? It's going g upon 2 downward and g upon 2 in horizontal direction, so yeah, we did the thing, of course. Pseudo forces ऐसे टाइप के लगने वाले, g upward g upon 2 नीचे g लगने वाला है, like g upon 2 ऐसा and g upon 2 like s ऐसा, right? So it's like 45 degree with horizontal, of course. और combined effective gravity क्या हो जाएगी? g upon square root 2 ऐसा thing. अब वो काम नहीं कर रहा, मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें? Doesn't make any sense. It should have worked. It should have worked, right? For c 2 square root 2 and then you got g upon square root 2 as the effective gravity and then rho, of course. और यहाँ पे atmospheric pressure है, that's the thing. तो this should really just be 2 rho g. अब वो काम क्यों नहीं कर रहा है? It's like, okay, 10 power 5 plus 2 rho g is like 2 times of 10 power 3 times g is just 10, so 10 power 4, right? And we want this in megapascal, so this is like 0.1 plus 0.02. It's supposed to be 0.12, but somehow वो तुमने correct नहीं दिया है. I don't get that. Oh god. Yeah, so 0.12. I mean around that, I guess. Like maybe B is correct. I don't know, yeah, but it should not have been this. It should have been. भाई 4 कैसे आ गया? यहाँ पे 2 होना चाहिए ना? Density of water is this thing. डेंसिटी ऑफ वाटर बोला है, लिक्विड क्या है? लिक्विड की डेंसिटी क्या दी है? ठीक है, अपनी डेंसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है इस लिक्विड की, सिर्फ वाटर के बारे में बोला है एंड आई एम अज्यूमिंग कि वाटर से भरा हुआ है, राइट? ओके, सो डजंट मेक एनी सेंस. आई थिंक मे बी बी इज करेक्ट, बट अपना मैच तो नहीं हुआ, वॉट एवर. मे बी बी इज करेक्ट एंड सिमिलरली फिर यहाँ पे मुझे मे बी लाइक सी इज करेक्ट. ऑफ कोर्स इट डजंट मैच, बट मैं क्या कर सकता हूँ? वेट, मे बी लाइक 0.1 of 5 pascals was, oh, maybe 0.1 of 5 pascals was actually, sorry, megapascals was the atmospheric pressure. तो ये जो इन लोगों ने दिया है वो तो करेक्ट नहीं रहेगा. ओके, दिस इज वियर्ड. ये दोनों अजीब थे. जस्ट मूव ऑन. मैंने पूरा किया ऐसा कोई मतलब, आई डोंट गेट इट. मेरा गलत कहाँ पे हो रहा है? एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये हो गया कंप्रिहेंशन टाइप. लेट्स गो टू द, अच्छा पांचवा भी है इसमें. What is the value of vertical acceleration of a box for given horizontal acceleration g upon 2 so that no part of the bottom is exposed? अच्छा, so no part of the bottom is exposed, huh? Or what do you want? For a given horizontal acceleration. Okay. So if no part is to be exposed, like ऐसा होना चाहिए, I guess. Total area कितना था? Total area था अपना 6, and this is of course dimension 2 times 6 है, so maybe ऐसा, because 6 times 2 times 1 upon 2 it's gonna work out, right? Yeah, sure. So I guess ये चीज होनी चाहिए. That's the critical condition, right? So yeah, and नहीं, तुम vertical acceleration बहुत ज्यादा कर डालो, then in that case as well, ये completely ऐसा ही हो जाएगा almost, right? या फिर वो horizontal acceleration का कुछ फायदा नहीं होगा. So horizontal acceleration ऐसी है, and then vertical acceleration जो भी अपन रखने वाले हैं उस वजह से ऐसा होने वाला है, and then finally got this slope. तो this angle, right, in this particular case ये 6 है, it's 2, this angle is like having 1/3 as the tan value, so tan theta is equal to 1/3. this angle is what? Theta, right? So ये चीज है a horizontal which is given by g upon 2, और ये जो डाउनवर्ड रहेगा it's gonna be g minus, और अपने को वर्टिकल एक्सेलेरेशन चाहिए. या ओके, सो oops, it should be g plus in that case. So जो भी ऊपर एक्सेलरेशन रहेगा I'll call that as plus, so g plus a, right? And then it's gonna make this angle, sure. So yeah, that's the thing. इस टाइप से बनेगा. It's gonna be 90 minus theta, और यहाँ पे g plus a is like, okay, tan of 90 minus cot theta is equal to g plus a upon g upon 2, which is 2 times of g plus a upon g,
So this is just equal to कितना था tan theta अपना 1/3 okay cool so 2g plus 2a is equal to 3g मतलब कि 2a is equal to g, a is equal to g upon 2, so g upon 2 upwards I would say. So there we go, a is the answer. Okay जो भी है, next question. Next आपके पास है subjective type. First question. An upper cubical tank completely filled with water is kept at horizontal surface. Its acceleration is then slowly increased to 2 meter per second square as shown. Side of the tank is 1 meter. Find the mass of water that would spill out of the tank. अच्छा ऐसे so it's 2 meter per second square in that direction, right? Okay, so क्या नीचे g होने वाला है which is 10 I would say, and this is like 2 in this direction, so it's making some angle with that. और कितना स्पिल होगा अपने को चाहिए, राइट? सो जो लास्ट 2-3 बूंदे रहेगी वो यहाँ पे रहेगी एग्जैक्टली, एंड देन यू जस्ट वांट दिस, राइट? इसको मैं हाइट h बोल दे रहा हूँ. ओके सो या राइट, अपनी जो ग्रेविटी एक्टिंग, इफेक्टिव ग्रेविटी इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, कौन सा एंगल बना रही है विथ हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हाट वी वांट. सो इट्स या 10 इस डायरेक्शन में, लेट्स जस्ट से दिस इज एंगल थीटा. सो tan theta is equal to 5, right? Because 2 in this direction and then 10 in that, right? So tan theta equal to 5 और ये theta रहने वाला है. So this is 90 minus theta, this thing is theta, this thing is 90 minus theta once again, right? So this angle is going to be theta. What does that mean? कि ये जो चीज़ रहेगी that's going to be 5h. Of course, yeah, that should be the thing. और 5h क्या होगा फिर 1 meter. So h is just, yeah, okay, h is just going to be 0.2. तो ये 1 है, then it's going to be 0.2. So 0.1 का एरिया स्पिल हुआ, right? Okay, cool. And it's a cubical tank, so 0.1 times 1 यानी कि क्या 0.1 मीटर क्यूब एरिया, सॉरी वॉल्यूम स्पिल हो गई होगी एग्जैक्टली. सो अपने को मास चाहिए, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर व्हिच इज ओके, सो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो ना. 10 पावर 3 इज द डेंसिटी, राइट? सो 10 पावर 2 100, so 100 kgs. Next, second question. A large tank is filled with two liquids of specific gravities, 2 rho and rho. Two holes are made on the wall of the tank as shown. Wall of the tank. अच्छा, दो holes किए. Okay, find the ratio of the distance from O of the points on the ground where the jets from A and B strike. और ये fixed है I guess. Surface नहीं है कोई यहाँ पे. ओके ठीक है, बस यहाँ पे फिक्स्ड है. ओके, लाइक इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा. रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ओ, राइट? ओके, नो बिग डील. सो देखो सिर्फ ये रेंज चाहिए ना, दैट्स लाइक द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज बिकॉज हॉरिजॉन्टल रहने वाला है. एंड टाइम पीरियड, ओ टाइम पीरियड इज आल्सो देयर. सो एक के लिए, राइट, कितना टाइम पीरियड रहता है? यू नो दैट like s is equal to half at square, in this case capital H बोल दो, half gt square. So t is just equal to square root of 2h upon g. So time period is the ratio of square root of h, right? So ये जो चीज है like okay, time period क्या रेशियो में, square root of इसमें क्या हाइट है यहाँ से, it's h upon 4 प्लस ये चीज which is h upon 2 I would say, right? So yeah, मतलब h minus 3/4 h, so 3 is to 1 square root करना है, राइट? ओके, और वेलोसिटीज किस रेशियो में? सो ये, राइट, इट्स आल्सो sort of h के रेशियो में रहता है. सो ये 1 है एंड देन दिस इज लाइक sort of 3 because ये 3 टाइम्स हमारा है. Okay, so v times t is just 1:1 basically. Yep. So that's the ratio is just 1. Next question. Second answer 1. Third question. Third is a laminar stream is flowing vertically down from the top, from a tap of cross section area a is just equal to 1 centimeter cubed, like that's n power negative 4. Okay, laminar stream flowing vertically down at a distance 10 centimeter below tap, so d equal to 0.1. The cross section area of the stream has reduced to 1.2 centimeter, so a dash is just equal to 1/2 centimeters. Okay, cool. So you know 1/2 times 10 power negative 4, whatever. Find the volumetric flow rate of the water from the tap. Sure. So इसकी velocity अपन को नहीं दी है, right? Okay, cool. Velocity तो दी नहीं है. Right. So initially इसका कुछ भी, right, area and then it's like flowing with some kind of volume and whatever.
and since 10 centimeter below the tap, the cross section area of the stream has reduced to, तो उसकी velocity बढ़ गई है, basically that's the thing, right? Sure. And it's a viscous, I think it's a viscous fluid or whatever. तो क्या क्या लगा सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं, so we can find the ratio of velocities. और क्या बर्नौलीज थ्योरम, या राइट, जब वो टैप से निकल रही, राइट, जब वो स्टीम टैप से निकलेगी देन उसमें होल्स रहेंगे, राइट और नॉट, उसको कंप्रेस कर दिया एज इफ कि इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, ओके राइट, मतलब वो एक्चुअल में जो स्ट्रीम है उसका उसमें होल्स रहेंगे ना, अपने से उसमें होल्स नहीं है, बिकॉज अदरवाइज गॉड we have to figure out the volume flow rate, right? Find the volume flow rate of the water from the tap. It's like 10 centimeter below it, जो भी velocity के साथ में जा रहा है, and after, right, so after वो निकल चुका है टैप से, अब हर पार्टिकल के ऊपर सिर्फ विस्कस फोर्स और कुछ भी नहीं है, there is pressure, I would say yes, okay, और ये compress होने वाला है, so oh god, think about it, velocity बढ़ गई, pressure decrease होना चाहिए, और ये नीचे जा रहा है, दैट्स द मेन थिंग, राइट, सो इस वेलोसिटी वैसे ही बढ़ने वाली है, आई नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, बट मुझे थोड़ा सा इसमें लेट्स जस्ट से अनईजी फीलिंग है, बिकॉज एक्चुअल में ऐसा होता है, आई नो, बट वो इस रीजन की वजह से नहीं होता है कि इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से बढ़ गई, उसमें अलग रीजन है, उसमें विस्कस फोर्सेस उसको अंदर खींच रहे रहते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट ठीक है, लैमिनार फ्लो है, सो आई विल अज्यूम नो होल्स आर देयर और व्हाटएवर, तो जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, दिस इज बर्नौलीज थ्योरम, राइट, सो हाफ रो v स्क्वायर, तो फाइनली जो वेलोसिटी रहेगी दैट्स गोना इंक्रीज बाय हाउ मच वी डोंट नो एक्चुअली, लेट्स जस्ट से v डैश स्क्वायर, ओके, प्रेशर दोनों केसेस में p नॉट था, सो नो बिग डील अबाउट दैट, ओके, इसमें ग्रेविटी कम हो गई थी, ओके, और यहाँ पे क्या है, हाफ रो v स्क्वायर जो भी इनिशियली प्रेशर था इसका, प्लस रो जी एच, अपने को h दिया हुआ है, राइट, या we have been given h, right, and we know that v dash is just equal to a dash upon a times v, right, so basically half, वो रो तो काट ही डालो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, so v dash को minus v square, that's like saying, yeah, okay, v square times a dash upon a का square minus 1 or something like that, हाँ, yeah, well वो increase होना चाहिए, right, so oops, it's supposed to be inverse of that, कभी कभी होता है, तो ये 2 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स, सो इट्स लाइक 4 minus 1 3, so 3v square is equal to 2gh, I would say, yes, it's the thing, so अपने को velocity मिल जाएगी इस तरफ से, so square root of 2gh upon 3, okay, and then this times area, that's the thing, so a square, वो volume flow rate रहेगा, that's the thing, so that's gonna be what, area कितना है, 10 power 84, square root of 2 times of 10 times h was 0.1, I would say, so upon 3 you guys just square root of 2 upon 3 times 10 power negative 3, and now you have to actually figure out this quantity, इसको ऐसे छोड़ दो ना, सब्जेक्ट की टाइप है, या नॉट इंटीजर टाइप, सो इसको और फिर क्या चाहिए वैसे, volumetric flow rate of the water from the tap, it is this thing, we know that, right, ठीक है, just leave it like that, so square root of 2/3 times 10 power negative 4. Next question, fourth question. Hopefully मैंने कुछ गलत तो नहीं किया. Fourth क्या है? Fourth is a spherical ball of density rho and radius 0.03 meter is dropped into a tube containing a viscous fluid filled up to the 0 centimeter mark as shown in the figure. क्या ये एक spherical ball dropped in the tube containing a viscous fluid filled up to the 0 mark as shown? Okay, this viscosity of fluid is given, so eta is 1.26. Okay, density कितनी दी है? Density of liquid is rho upon 2. हाँ, oh अच्छा, density of ball अपने को दी है is just 2 times. हाँ ठीक है ना, एक काम करते हैं अपन, रो अलग टाइप से यूज करेंगे, so 2 रो और yeah, okay, and density of liquid is rho, और जो रो है एक्चुअली वो कितना है? It is 1260. Okay. Assume the ball reaches the terminal speed by 10 centimeter mark. Okay, so वो जो depth रहेगी, that is equal to 10 centimeters, like 0.1 meters.
फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू ट्रैवर्स द डिस्टेंस बिटवीन, और क्या टर्मिनल स्पीड, ओके, और इनिशियली तो ये 0 पे था, राइट? ओके, ट्रैवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द 10 सेंटीमीटर मार्क एंड द 20 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा, वेट, तो मैं ऐसे कैसे अजम्पशन कर सकता हूँ मैं कि ये 10 सेंटीमीटर मार्क पे, yeah, we know it's kind of like exponentially decaying, so ये actual में ऐसा नहीं होना चाहिए, it's just gonna reach a terminal velocity at, mark infinity, but ठीक है, तुम अपन assume कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर मार्क पे ये, it's gonna reach terminal velocity, whatever, okay, और उसके बाद में फिर चाहिए find the time taken by the ball to traverse the distance between 10 centimeters, right? तो अपने को 0.1 अपॉन दी terminal velocity करनी है, how do you figure out the terminal velocity? इससे buoyancy वगैरह भी रहेगी, right? I don't like that. रेडियस दिया है अपने को, बस उतना ही दिया, राइट? ओ हाँ, अपने को रेडियस है, सो आर इज जस्ट 3 टाइम्स ऑफ 10 पावर डिग्री 3। लेट्स डू इट। सो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स दैट्स वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, right? That times g. This is the gravity force, effective gravity force on this. That's equal to the viscous force and the terminal velocity. It is equal to 6 pi r viscosity velocity, right? तो ये गया, ये गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, it's gonna be 3 like that, so 2 9 and then you got rho b minus rho l times g, r cube भी है यहाँ पे by the way, तो ये तो r square हो जाएगा, right? Okay, upon question of viscosity, that's the velocity that you have, right? Yeah, of course, and what you want is h, okay, ठीक है, so 3 viscosity h upon 2 rho 1 minus rho, ये मैं लिखने के जान पा रहा हूँ इसलिए, and then gr squared, right? Yeah, I guess so. Yeah, that should be the thing. That should be the thing. So बस इसे प्लग करते हैं, get the value. So 3 कितना है ये viscosity का क्वेश्चन? 1.26. बहुत ही जीरो है तो। ओके, और क्या है? h is just 0.1 upon 2 times ये चीज which is just rho basically, और वो अपने को दिया था density of liquid is right 1260, right? Okay, और क्या है, g which is we are assuming 10, right? and r squared, तो अपने को r is given like that 9 times 10 power negative 6। चलो करो कैलकुलेट इसको, क्या हो जाएगा ये, oh ये तो बहुत ही अच्छा, ये कैंसिल हो रहा है, so right 3 times 126 times 10 power negative 3 I would say, isn't it, upon 2 times 126 times, so 10 power 2 आ जाएगा, and then you got 9 and then 10 power negative 4, तो ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा, this cancels out, यहाँ पे 3 आएगा, it's gonna be 10 upon 6 or something, that's like 5 upon 3, so 5.3 is the time required, 5.3 seconds, right? Next question, fifth क्या है, a soap bubble has radius r and thickness d as shown if it collapses into a spherical drop. The ratio of the excess pressure in the drop to the excess pressure inside the bubble is what? Radius r, thickness भी दी है इसमें, oh god, okay, it collapses into a spherical drop, तो इसके अंदर की एयर का क्या हुआ, okay, ये तो बाहर निकल गई होगी, the ratio of excess pressure in the drop to the excess pressure inside the bubble. Okay, oh god, it's gonna be not good. So R is much bigger than D. That's at least nice. So bubble में excess pressure क्या है? It is gonna be 40 upon R, of course, right? अब जब ये नीचे यानी देखो अगर कोलैप्स हो जाएगा, what you get? So it's 4/3 pi. I would say approximate करके यार थोड़ा बहुत कर डालते हैं, you know. So it's like 4 pi R square dr, 4 pi R square and then d, isn't that right? So that's equal to जो फाइनल अपनी वॉल्यूम रहेगी which is like 4/3 pi r cubed. I know ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, but whatever, who cares? तो ये तो गया, it just oh it's small r cubed, so small r cube is just equal to 3 r square d, right? Now we got that, like r is just going to be equal to this guy का 1/3 power. तो आपको चाहिए क्या है, we just want, right, जब ये ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, it's like 2t upon small r is the thing, बस वॉल्यूम कंजर्व कर रहा उतना ही है, so that will be the excess pressure
राइट ऑफ कोर्स। इसमें ये पुट कर देते हैं अब पहले अपन रेशियो ढूंढ लेते हैं ना डेल्टा पी टू। अपने को ढूंढना क्या है वैसे in the drop versus the excess pressure, right? So this thing versus that, right? Okay, okay. Which is this thing upon that. So ये जाएगा r upon r और फिर 2t upon 4t, which is like 1 upon 2 whatever, I guess. So 1 upon 2 r upon ये चीज, right? Like okay, 3r square t की power 1/3. It's gonna be like 1 upon 2 and then r to r3 is like r upon 3t की power 1/3. Isn't that right? So there we go. और अपने को आर वैल्यूज दिया नहीं, दैट्स वाई सब्जेक्टिव राइट। सो 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स आर अपॉन 3t की पावर 1/3। दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ यस, ये क्या, ये तो ओ सॉरी, ये जो है दिस वाज 6 एंड दिस वाज द 5th क्वेश्चन। मैंने 4th स्किप किया लगता गलती से। 4th अभी कर लेते फिर। A cylindrical vessel open at the top, 20 cm high and so height कितनी है 0.2, diameter 10 centimeter. Okay, so radius is 5 centimeter. That's going to be 0.5 meters. A circular hole whose cross section area, so small a is just equal, नहीं small a नहीं, capital A use करते हैं इसके लिए, is equal to 1 10 power negative 4 whatever, is cut at the center of the bottom of vessel. Water flows from the tube above it into the vessel. ओके एट दिस रेट, सो 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसमें क्या बोलूँ, इससे म्यू बोल देता हूँ उसको। सो म्यू इज जस्ट इक्वल टू, राइट, क्या रेट है ये 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इज इन दैट राइट? ओके, फिर डी वी अपॉन डी टी वॉट एवर कन्वर्ट हो इसको सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10 पावर नेगेटिव का क्यूब, मतलब 10 पावर नेगेटिव 6, सो 10 पावर 2 10 पावर नेगेटिव 4 हो जाएगा ये। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द वेसल अंडर स्टेडी स्टेट, अंडर स्टेडी स्टेट। So जितना बाहर निकल रहा होगा that's supposed to be this much, right? So a times जो भी velocity रहेगी इसकी, which is just square root of 2gh, isn't that right? Yeah. I mean, yeah, it must be, right? और जो एरिया है वेसल का इट्स पाई आर स्क्वायर। सो ये वर्सेस ये कितना है एक्चुअल में? ओह शिट, ये तो सही नहीं हुआ। It's 10 power negative. It's not like negligible, unfortunately. It's not nice. So we have to use Bernoulli's somehow. But काफी complicated हो जाएगा ये तो. So, right. It's not good. So at this point and at this point, इसके बीच में difference h रहने वाला है, right? So use Bernoulli's, of course, like half rho v square. Yeah, just have to figure out what this height is. So ये अपन v बोल रहे हैं, यहाँ पे u आ रहा है, सो हाफ रो u स्क्वायर प्लस इसमें ग्रेविटी का इसमें इंपॉर्टेंस लाइक ओके रो जी एच प्लस इसमें जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों को भूल जाओ। दिस इज जस्ट इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर प्लस 0, बेसिकली हाइट है नहीं इसमें। सो या क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर प्लस 2gh is equal to v square. So this actually does matter, huh? Okay, and what do we know? So v times of a is just equal to u times. Oh, इसमें dm upon dt दिया unfortunately. Oh, right. तो velocity दी नहीं है, because dm upon dt दिया है. That's not good. Oh god. Yeah. But you know what? Just assume कि a naught area था इस चीज का. So like this times a naught doesn't really matter, does it? Hopefully it doesn't. So what would that mean? Or God, this is not making sense. Right? Unfortunately मुझे सब पता नहीं है, तो this is not going to be happening. अपन ऐसा भी नहीं assume कर सकते कि यहाँ पे velocity 0 है, ये तो है इनफैक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेंगे, व्हाट्स द बिग डील। सो ए नॉट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस थिंग एंड sorry, we know what dm upon dt is, so actually might not be that bad, right? So अपन u in fact calculate कर सकते हैं, we can figure out v as well. So let's do the thing. क्या हो जाएगा, mu is just equal to density times
A times V, right? And it's also just equal to density times U times A naught. So V will just be mu upon rho A, and U will just be mu upon rho A naught. बस इसमें put कर देते हैं, we'll get the thing. So right, mu square upon rho square A naught square plus 2gh, that's equal to, right, I know मुझे यहाँ पे करना था, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. Not a big deal, is it? Yeah, it's not a big deal. और प्रेशर, या यहाँ पे भी अभी भी एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है. या श्योर, although वेलोसिटी अलग है इसमें. दिस इज काइंड ऑफ गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, इजंट इट? बट अपन यूजुअली एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते तो मैं यहाँ पे क्यों कुछ और लूँ, राइट? इट हैज टू बी एटमॉस्फेयर प्रेशर बिकॉज ये पूरी सरफेस ओपन है ना एटमॉस्फेयर से. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर्ड अपॉन rho square A square, right? Yeah, so now we can figure out what height is supposed to be. So 2gh is mu square upon rho square times 1 upon A square minus 1 upon A naught square. So अपने को A square दिया है, A naught अपने को ढूंढना पड़ेगा, and just really bad. H is just equal to mu square upon 2g rho square. God, rho square क्यों डाल दिया इन लोगों ने हर जगह पे? Not liking it. और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 upon A square minus 1 upon A naught square. Somehow we have to calculate this thing. Okay, let's try to figure it out. Okay, चलो करते हैं. So yeah, mu square कितना है? 10 power negative 8 upon 2 times g is 10, and then rho square. Rho is देखो रो तो पता नहीं है क्या, ये वाटर है ना, वाटर. So 10 power 3 होगा रो. So it's gonna be 10 power 6 and 1 upon A square वगैरह पे करना पड़ेगा. So A तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, just 10 power negative 4, so 10 power negative 8 आ जाएगा यहाँ पे, minus 1 upon A naught square. This is kind of complicated, so like pi r squared, pi times so okay 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, and then you got 10 power negative 1 का square, like 10 power negative 2 or whatever. So this thing is a square, so like pi squared upon 16, and then that times 10 power negative 4. Yeah, this is the thing. Of course, अब ये कितना छोटा है इससे in comparison, right? Yeah. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? Well, I mean, of course, A naught actually has to be bigger, so right, ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा. That's the thing. So हाँ, actually अपन इसको still ignore कर सकते हैं because ये काफी छोटा है. अगर इसको simplify करो 10 power 8 आ जाएगा यहाँ पे, and this is like 10 power 4, और यहाँ पे क्या minus 16 upon pi square is approximately 10, I would say. So ये चीज मतलब कि 1.6 times 10 power 4 in comparison to 10 power 8 तो काफी बड़ा है. So कर दो ignore इसको, बहुत ही अच्छा. 1 upon 2 times of 10 times 10 power 6, that is the height, right? Yeah, I guess. Of course. What else? Yeah, it's got to be the thing. There you go. So ये हो जाएगा 0.5 times 10 power negative 7. So like 5 times 10 power negative 8. These many meters. Which is crazy यार, इतनी छोटी सी हाइट रहने वाली है इसकी. हाँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं सॉल्व कर दिया इसमें? Like no, या तो मैंने सही से. Rho is just 10 power 3, of course. Mu जो था, what was the volume flow rate, sorry, mass flow rate, right? कहाँ पे चला गया? हाँ, fourth question, right? 100. Oh shit, ये volume flow rate है. Not nice. Volume flow rate है, density square नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ये नहीं लगेगा फिर, right? Unfortunately ठीक है, अब okay, right? Yeah. Yeah, just density square नहीं चाहिए, that's the thing. Sure. Good. चलो फिर, so यहाँ पे 10 power 6 नहीं होगा, just gonna be this thing 1 upon 20, right? Which is 5 times 10 power negative 2, I guess. So 0.05, that is. Yeah, इतना क्यों इसको fancy लिख रहे अपन? Right, that's the thing. और क्या क्वांटिटी अपन एक्चुअली निकाल रहे थे? हाइट. So these many meters, or basically 5 centimeters.
चलो ये तो हो गया, चेक कर लेते। सो फोर्थ तो अपना करेक्ट आया, सिक्स्थ आर अपॉन 24, एंड देन हाँ ठीक है ना, 2 का क्यूब 8 वो हो जाएगा अपने आप, दैट्स राइट। फिफ्थ क्या है, 5 सेकेंड्स, अपन ने 5 थर्ड सेकेंड किया है, विच दिस इज रॉन्ग, आई डोंट नो क्या हो गया इसमें। और क्या था, सो थर्ड का आंसर, हाँ मैं नहीं कैलकुलेट करने वाला हूँ ये, 4.9 लीटर पर मीटर, हाँ पर मिनट व्हाट, नो गिव मी एन ऐसा पर मिनट, आर यू सीरियस, नो वे, वेट सेकेंड, स्क्वायर रूट 3, कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें। फर्स्ट 100 है ओके, और सेकेंड इज स्क्वायर रूट 3/2, और ये पता नहीं क्या होगा इसका, समथिंग नॉट राइट अबाउट दिस, स्क्वायर रूट 3/2 वैसे आ गया। देन कंपैरिजन टाइप में क्या है, फिफ्थ का आंसर ए, फोर्थ का आंसर बी है, थर्ड का आंसर बी है, सेकंड का आंसर सी, एंड फर्स्ट का आंसर डी, आई डोंट नो, वेल व्हाटएवर, देखते थर्ड का क्या हुआ है कंपैरिजन टाइप। कहाँ पे चला गया कंपैरिजन टाइप, ओके तो थर्ड का आंसर उन लोगों ने बी दिया है, चला गया, दिस इज 1.1। हाँ अगर अपन 1.0 सो 0.105 मेगापास्कल्स लेते एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, देन इट वुड हैव मेड परफेक्ट सेंस। और यू नो ओके, और क्या है, फोर्थ का आंसर लोगों ने बी दिया, सो 0.14 जो अपने को मिला ऑलमोस्ट वैसा, बट थोड़ा सा अलग, या एग्जैक्टली अपने को 0.12 मिला था, इन लोगों ने ये लिया है। सो अपने जहाँ पे, या लाइक अपना कहीं 2 का फैक्टर क्या कहीं गलत तो नहीं हो गया। आई डोंट नो हाउ कैन दैट बी, अपन ने कुछ कैलकुलेट तो सही से किया, राइट, या लाइक पी नॉट प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 था यहाँ पे, प्लस सॉरी 2 स्क्वायर रूट था ना, बिकॉज या लेंथ क्या थी अपनी 6 और 2, राइट, ओके, और सक्सेसफुल थिंग, okay, and then that times g effective, and then that's density of course, g effective versus g upon square root 2 basically, right, that was the thing, so this should have been 2 rho g, which, yeah, okay, it's supposed to be 2 times 10 power negative 3 times 10, sorry 10 power 3 not negative 3, so 10 power 4 तो अपने को 0.02 लेना है, that should be the thing, so 0.12, but somehow उन लोगों ने 0.14 लिया है, I don't get कि क्या गलत हुआ मेरा, but anyway that's what it is, तो या फाइन, और क्या है, और सर्टिफिकेट टाइप मेरा सेकेंड 1 नहीं है ऐसा बोल रहा है, ओके, इट इज स्क्वायर रूट 3 पॉइंट व्हाट, मैंने डेंसिटीज देखी नहीं इसमें, मैंने दोनों को रो अज्यूम कर दिया होगा, इतनी घटिया मिस्टेक मेरा गलत हुआ, कांट बिलीव दिस, सीरियसली ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली करते हैं। सो वेलोसिटी का रेशियो क्या होने वाला है, तो पहले क्या इस पे प्रेशर आने वाला है, लाइक रो जी एंड एन एच अपॉन 4 वॉट एवर, सो यू नो एच अपॉन 4 को एक यूनिट मानो, तो फिर और रो को भी एक यूनिट मारो, एक यूनिट मानो, सो दिस विल जस्ट बी 1, अपन स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड देन प्लस नथिंग, ओके, सिर्फ कितना ही होने वाला है, और इज टू, सो अपन ए इज टू बी कर रहे हैं बाय द वे, राइट, दिस इज ए इज टू बी, और इसके लिए होगा स्क्वायर रूट ऑफ, पहले तो 1 आ गया एंड देन प्लस, अजीत पूरा पूरा लेना ना, लाइक 2, ओके 2, और फिर सिर्फ ये बचा हुआ 1 टाइम्स 2 यानी कि 2, सो सॉर्ट ऑफ 4 यानी कि 2, तो इसका भी 1:2, दिस इज दैट रेशियो, और डेंसिटीज राइट, सॉरी हाइट्स, हाइट्स का स्क्वायर रूट का रेशियो जो भी है, मतलब कि टाइम पीरियड, हाँ वो यू गेट द आइडिया राइट, और वो स्टिल सेम रेशियो में रहने वाला है, सो इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, राइट, सो या इज दैट करेक्ट और नॉट, थोड़ा सा अजीब है ये, of course it's 1 over there, like okay, that would have been 2, now this thing is 2 more like 2 of course, so square root of 3 upon 2 would have been the ratio I guess, right, a is to b, और उन लोगों ने क्या दिया, उन लोगों ने दिया
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सो उनका अभी भी गलत है, राइट? तो उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ पूरा का पूरा 3/2 दे दिया। आई डोंट गेट इसमें क्या गलत हुआ। क्या still don't get it. Time period times velocity, that is the thing, of course. When a time period is proportional to square root of h, ये जो height रहेगी O से height, and this is proportional to the depth from this point. So we got that thing, but somehow अभी भी वो लोग बोल रहे हैं मेरा गलत है। I mean square root of 3/2 is the thing. What else can it be? क्या और इसमें ऐसा सकता है जो मैंने गलत किया हो? I don't see this. इसमें स्क्वायर रूट 2 का फैक्टर कैसे आ रहा है आखिर? Right, I don't get it. Oh, because ये जो है right, so half rho v square is equal to the pressure, I would say, right? Yeah. तो इसमें रो जो है वो 2 रो है एक्चुअल में। सो अपने को स्क्वायर रूट करते समय वी वुड हैव टू डू स्क्वायर रूट ऑफ 4/2 बेसिकली। सो इसलिए स्क्वायर रूट 2 आया, राइट? कभी कभी होता है यार कैलकुलेशन एरर्स। सो एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज करेक्ट। मुझे पूरा ही डिटेल के साथ में करना चाहिए था, वेल वॉट एवर, अब मुझे आंसर समझ गया। और क्या गलत हुआ? सो सेकेंड, राइट, थर्ड और फिफ्थ। ओके, फिफ्थ तो यार ओके, फिफ्थ सॉरी, थर्ड तो वेट, थर्ड क्या था? अच्छा, वो आंसर सिर्फ कैलकुलेट करना अलग है, ओके फाइन। एंड ये क्या है? 5/3 सेकेंड्स, राइट? फिफ्थ का आंसर। मैं पूरा वापस नहीं करने वाला हूँ, नहीं, जस्ट नहीं। just gonna leave it like that. जो भी गलत हुआ होगा हुआ होगा, we don't care about this anymore. ठीक है फिर, that's done. See you in the next video.